और आपका आज वीडियो में स्वागत है। आज जो वीडियो हम लेकर आए उसका टाइटल है योगी जी एज इंडिया's नेक्स्ट पीएम जे साई दीपक डिस्कसेस बीजेपी's फ्यूचर। तो चलिए देखते हैं ये वीडियो, लेकिन से पहले इस वीडियो से चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर को फॉलो किया चैनल को। उसके अलावा लोग चैनल के लिए इंस्टाग्राम लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। Your friends are scrolling through short content, but you, my friend, you're here to learn. Welcome to TRS Clips. There are 4 or 5 people within the BJP who could be sort of next PM candidates. Modi ji probably has 4 years left, and then at some point he's going to take a step back. Everyone anticipates that as well. His whole kind of basis, and this is what I've learned from Sanjeev Sanyal, is that he wants to focus on infrastructure. Right. Someone will have to take the game forward. Right. Simple question: who's the next PM? What's the future of the BJP? When there is no opposition or quality opposition, the only opposition that can theoretically come from then is from within the society, where the society says we need one more, or from within the existing power structure. So this is a theoretical projection, not based on any first-hand knowledge and based on what has happened in the past. If that were to happen, I would see the gradual formation of what I call the Naram Dal and the Garam Dal within the BJP. The Naram Dal focuses only on infrastructure, investment, all this. The Garam Dal saying, पथराव हो रहा है, stone pelting हो रहा है, हर वंदे भारत एक्सप्रेस पे पत्थर फेंके जा रहे हैं. And you have people asserting themselves in the most vigilante fashions possible. And you're looking at illegal migration. You're looking at China. You're looking at the changing demographic balance in border districts, in close to 200 districts. Are we then creating Vikas, where a country with fantastic infrastructure is ripe for taking over? आप सब कुछ तैयार करके किसी और के हाथ में दे देंगे. Effectively, what's happening with Europe? First world infrastructure being handed over to third world immigrants, especially from the Middle East. Okay? Or even for that matter, from Pakistan specifically. Right? So if you have to look at a situation which you don't want, that situation is Europe, where you've got Vikas, but you have zero cultural moorings or civilizational identity anymore, thanks to their hyper focus on secularism, where they've killed their own identity and they don't have an identity to speak of. And when identity does not exist, the human consciousness will be filled with something else, because vacuum cannot exist. दिमाग खाली नहीं हो सकता है, कुछ ना कुछ होगा. Either it's gold or garbage. It's for you to decide, right? So this Naram Dal Garam Dal fight may at some point come to the fore, and that may result in changing the outlook of the party, or it could result in other possibilities. I hope it results in, let's say, a reorientation of the apparatus for a good reason, because it's now become a winning machine. Right, for the most part, with, of course, state-wise they have lost a few, and with that traction momentum, I think it would be a tragedy if that momentum is cut short because of irreconcilable differences with him on these aspects. So they have to start accommodating it. So somewhere I'd say a Yogi Ji's approach to law and order, okay. The continued insistence on infrastructure, right? Both these may have to go hand in hand. You have to realize that not only has Uttar Pradesh improved in the context of law and order from 2017, it's also done really well in terms of infrastructure, by the way. It's just that I think his branding is extremely intense for the left wing, that they push certain narratives. What's the population of Uttar Pradesh? 25 crores, close to that. Okay? But at 1.4 billion, you're looking at least 20 crores. Which state in this country can handle that kind of population? And this is a state which is unfortunately previously called one of the Bimaru states. Bihar, Madhya Pradesh, Rajasthan and Uttar Pradesh. Right? He did not inherit a Gujarat. He inherited an Uttar Pradesh after Mayawati and Samajwadi Party. Right? People living in Noida will tell you that there were massive power cuts and every house had to have either a generator or an inverter depending on what they could afford. That's changed. Roads have become safer and better. Police stations are more approachable. Previously, a police station in Uttar Pradesh was a difficult place to go to. You never knew how you'd be treated. That has changed. Samsung wanted to move out of Noida because they weren't sure of how the new establishment would handle, let's say, investment.
He convinced them to stay back. The manufacturing facility, from what I understand. A delegation comes from Iran. He brings together that delegation with artists in Uttar Pradesh of Shia Persian origin and makes them meet each other. And he says, you know what, if you have any problems investing in the state, I'm available. Here's a hotline. This is what I've heard from reliable journalists. Okay. So clearly he seems to be able to balance both sides. You know, in a state like Uttar Pradesh with its huge legacy, let's not forget that Ram Janmabhoomi happened in Uttar Pradesh. Therefore, there are very clear communal tensions in the state in terms of legacy, what he has inherited. I would say, compared to that, his turnaround, it's one thing to actually do well in a state which already has a fantastic reputation for progress. But to do it in Uttar Pradesh, it's always been associated with what? The Badlands of India. Or the cow belt. What a pejorative thing to say about a country that civilizationally has a certain place of worship for cow. To use it as a pejorative, say cow belt, Hindi heartland, right? I'd say that the way of the future is to combine both sides. Infrastructure with a very clear position on law and order. Is he a pick for the next PM? I have no idea because I'd like to see how he goes in terms of his appeal beyond his home territory. Okay. He has to, because you see, there is going to be a Hindi barrier in Tamil Nadu, right? And he also wears the saffron, which I'm very happy about. Okay, I have no problems with it. I'd want to see how that translates to his ability to reach out to people. Then also is the important factor of his ability to handle international optics. Taiyari do level ki hogi. One is pan-India, the second is the global stage. Both. Which could be his weakness. I'm not saying it's a weakness. I'd simply say it's an area because you see, I'm someone who looks at it's a weakness if someone cannot work on it or does not have the ability to actually work on it. But if someone shows the ability to work on something, I'd say it's an area for work. Okay. That's how I'd put it. I don't have enough research or facts and figures to argue on the left's behalf. I'll tell you what the left will say. Encounter killings. Okay. That's what they'll latch on to. They'll say law and order. Ask the women folk, or even men folk for that matter, or to use their language, the non-binary gender identity. Okay, if they're safer in Uttar Pradesh today compared to before. This I can validate because I've been to Uttar Pradesh a lot. This is the general narrative. Right. Safer than ever. Lucknow has become such a place to go to. It's brilliant. Hazratganj in Lucknow mimics Connaught Place in Delhi in terms of its architecture. What a happening place. Of course, I'm not going to say that let's use that as the basis for everything else. But other cities also. It's not as if this is one of those states where it has only a couple of cities to showcase. It's trying to do, so you have a Prayag, you have a Kashi, you have a Noida, you have a Lucknow. A lot of these cities, each of them is capable of generating a lot of income because they have traditional industries. Badhoi, which is about 60 kilometers away from Varanasi, is known for being the carpet town of the world. Almost most carpets that go from Bharat have some contribution from that place. Similarly, several places have each, let's say, their own industries, their own legacy of industries. So it's actually a sleeping giant which is awakened. And Uttar Pradesh can turn around the two states which, frankly speaking, are beautiful, culturally rich, and which have the resources. Bihar and Uttar Pradesh. Turn them around. Bharat will see greater strides towards progress on an overall level. One, because of the sheer size and the scale of the populations. I've not had the good fortune of going to Bihar, in fact. But everyone who's been there says, what a green and beautiful state. What is it that Bihar lacks in terms of resources? And let me challenge anyone when they say that Biharis don't have the IQ for it. No, not at all. Bureaucracy, they're fantastic. Engineering, they're bloody good at it. Yeah. They're probably the most high IQ community. Exactly. They're among the best. You need to go and find that high IQ when you interact with them. If you go to your, let's say, your railway depots, or let's say your IRSME establishment, which is where you manufacture your coaches and you repair, most of them are Biharis. They're bloody good at it. They don't believe in passing off communication skills as knowledge. So their emphasis is not on English, rightly so. They focus on core strengths, manufacturing sector. And IAS, there's a huge Bihar contribution there because they have a legacy contribution there. So these two states, I think, are to watch out for. Madhya Pradesh,
has turned around the agriculture sector brilliantly. And now it's focusing on industrial policy. Okay? I should know this. I'm the special counsel for the state government of Madhya Pradesh in the Basmati litigation. And I know how they've turned this around. I'm just coming from Indore. I had a lecture last evening at Ujjain. Enlightened students, youngsters, culturally rooted, very proud of their civilizational origins, their religious origins, and eager and keen to perform and show that do not associate Madhya Pradesh with the Chambal Valley of the past. They come with that kind of zeal and ambition. So what is stopping them? If there are right opportunities provided, these three states, huge, large, resource-rich, can turn the India story around, the Bharat story around, fully. By selling things to the rest of the world. Yes. You know, one of the things that's undertapped is what I call the branding economy from the perspective of intellectual property. I'll give you a simple example. Sure. What do you think of France when you think of, let's say, foods, liquids, champagne? Yeah. Right? Scotland, you're looking at Scotch whiskey, right? Or the the tweed jackets, on and so forth, right? Why? One is creating a product. The second is to create an ecosystem around it and quality standards so that you know champagne ki quality ye hogi. This is how it should be. Swiss cheese, feta cheese, Greek cheese, or whatever it is, right? During World Trade negotiations, these countries were fighting for rights over spirits and cheeses because that's their primary industry. Each of these states has such products to offer across the board on the manufacturing side as well as on the agriculture side. If you were to actually create a brilliant branding economy and quality control economy for each of these things, you are ensuring the local population stays there. What does that do? Stops the local population from running to cities and crowding cities. The local brain drain. Exactly. Because then there's so much of stress on the cities and people are leaving the villages. That leads to all kinds of problems. So if you're able to give them enough empowerment and enough enabling metrics which give them incentive to stay back, thrive. When people are watching TV, what are they looking at? Delhi ऐसा होता है, Mumbai ऐसा होता है. अगर वहाँ जाने की ज़रूरत ना पड़ी, and people say we'll stay here, we'll turn this into a different place altogether. That's the trick. And so local branding of the economy and giving it a foothold and let's say the support that the state can is where I think the entire trick is. Madhya Pradesh has started doing it. Yeah. The entrepreneurial perspective here is that I think a bunch of generations have missed out on marketing 101s and branding 101s there. Probably this new under 16, under 14 generation is They're learning picking the up game. Correct. because of Geo, because of YouTube, just the internet reaching there. So the startup culture has gone to the tier 2 and the tier 3 cities. Yeah. And using their traditional strengths. It's not as if they're suddenly talking about apps. They're talking about startups for their karigari, for their carpets, for let's say whatever they manufacture locally. Here, there is a huge leap in people's understanding of what is known as the GI tag, the geographical indications tag. Like Kanchipuram silk, Basmati rice, right? That tag is what gives it value. If you remove the Basmati tag from the rice, it sells at 500 rupees per quintal. If you add it, it's $1,500. That's the difference. That is the importance of branding. I would have asked you how you actually solve this problem of teaching people branding and marketing, but I think it's happening through the internet. Correct. So it's kind of a function of time. There are rough edges, but they learn. Yeah. Goes to show why Shark Tank India has taken off so much. Right. There's actually that much interest in Correct. raising money. I just hope, or at least I wish it weren't as elitist as it is. Shark Tank? Yes. What's your criticism? I think some of the judges could perhaps lower their snobbery. You want to take names? No. Okay. Because names take away attention from the content. Okay. Fair. I'm interested in the issue. Fair. I'm saying it's a good idea. You have a great platform. You can actually help build the India story from a startup perspective. Maybe park your elitism aside for a while. I'm not accusing everyone, some. And hope to actually encourage people a bit more, especially those who may not have the grooming skills or the social graces that you expect of them. Yeah. That's it. So if you enjoyed this video, make sure you check out this playlist for more videos just like this. It's TRS Clips. यूपी जो है वो इंडिया की बड़ी स्टेट्स में से एक है, लेकिन जो है हाँ अगर देखा जाए एक टाइम पर जो है आप यूपी को कहते थे कि भाई वहाँ पे जो है वो क्राइम जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि बहुत सारी आप वेब सीरीज़ देखें या न्यूज़ देखें आपको जो है वो यूपी से रिलेटेड जो है काफ़ी ज़्यादा
सर्कुलेट होती हुई जो है वो दिखाई देती थी। लेकिन हाँ, अगर करंट टाइम में बात करें, सिनेरियो को देखा जाए तो आपको काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल जो है वो नज़र आता है। तो कोई शक नहीं इसमें यूपी में जो योगी जी की गवर्नमेंट है उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसमें। और मैं ये भी बोलूँगी कि जिस तरीके से उन्होंने बात की, सारी डिस्कशंस हुई, वैसे जहाँ तक मैं अपनी बात करूँ, सुनने में जो आता है, एक तो मुझे योगी जी का नाम सुनने को आता है जो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर्स में अगर बात करें, और एक अमित शाह जी का मुझे नाम जो है वो सुनने को मिलता है। बाकी और प्राइम मिनिस्टर और जो मिनिस्टर्स हैं उनमें से मतलब लोग ये भी कहते हैं कि गडकरी जी भी बने, या फिर आई थिंक हाँ, इन 3 लोगों का मैंने जो नाम है ना वो सुना है कि लोग ये चाहते हैं कि इन तीनों में से कोई आगे नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने। अब जो बीच में इशू बताया गया, जहाँ तक मैं समझ पाई हूँ इस डिबेट को, उसमें ये बोला गया कि जब क्वालिटी ऑपोजिशन ना हो तो फिर क्या होता है कि ऑब्वियसली जो रूलिंग पार्टी होती है उनकी स्ट्रेंथ खुद ब खुद जो है वो बनती भी है, क्योंकि फिर ऑपोजिशन आपको, जैसे उन्होंने बोला भी कि मे बी कोई लोगों में से कोई ऑपोजिशन जो है वो आपको देखने को मिले। और बीच में उन्होंने 2 आप कह लो कि जैसे 2 तरह के आप कह लो कि ग्रुप्स का एक तरह से जिक्र किया कि जैसे नर्म दल और गर्म दल, यानी कि एक ऐसे लोग जिनकी अप्रोच सॉफ्ट है जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस करना चाहते हैं, और एक ऐसे लोग जो मे बी थोड़े अग्रेसिव हैं और उनका जो रुझान है वो उन चीज़ों पर है जहाँ पर जैसे इलीगल इमिग्रेशन की उन्होंने बात की, पथराव की बात उन्होंने की, बाकी जो मतलब मैटर्स हैं जो कि सोसाइटी को और कंट्री को इम्पैक्ट करते हैं। बेसिकली अगर हम बात करें तो नेशनलिज्म हम बोल सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। हाँ, जहाँ पर नेशनलिज्म आपका थोड़ा हाई रहता है, मे बी उस चीज़ के बारे में उन्होंने जिक्र किया है। अगेन ये मेरी मतलब अपनी जो समझ है, जो मुझे समझ आई वो मैं बता रही हूँ। हो सकता है कि पर्सपेक्टिव थोड़ा डिफरेंट हो, वो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा। सो मुझे ऐसा लगता है कि दोनों चीज़ों की एट कह लेंगे सेम टाइम आपको ज़रूरत होती है, क्योंकि कुछ आपको अगर देखा जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि चाहे गवर्नमेंट है या कोई भी अगर मैटर है, स्पेशली कंट्री के जो मैटर्स रहते हैं उसमें आपको सॉफ्ट अप्रोच वाले लोग भी नज़र आते हैं और कुछ ऐसे भी अप्रोच वाले लोग नज़र आते हैं जो अग्रेसिव होते हैं। और मुझे लगता है कि दोनों की अपनी अपनी जगह पर आपको ज़रूरत महसूस होती है कि जो अपने अपने जो उनका एक क्राइटेरिया रहता है उसको फुलफिल करते हैं और वहाँ पर वो काम करते हैं। मतलब ये अगेन ये मेरी अपनी सोच है। बिल्कुल। अच्छा, मैं सबसे पहले तो बात करना चाहूँगा कि भाई जहाँ पे आपने बात की प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट के लिए, तो भाई उसके लिए मेरा ख्याल है कि आपके साथ ना एक अच्छा सारथी होना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो आपके रास्ते जो है वो हमवार करे, यानी कि बैलेंस करे रास्तों को। जैसे आपको पीएम मोदी जी की जो है वो लाइफ में देखने को मिलता है कि भाई अमित शाह जी जो है उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो रहा है। तो मेरा ख्याल है कि अगर बाकी भी इन फ्यूचर अगर कोई प्राइम मिनिस्टर जो है वो बनना चाहते हैं तो उनके साथ भी जो है ना पार्टी का सपोर्ट और बीच में जो है ना सारथी कोई एक ऐसा होना ज़रूरी है जो रस्तों को जो है ना बैलेंस करे। फिर उसके बाद जहाँ तक इमिग्रेशन की अगर बात की जाए तो मेरा ख्याल है कि भाई बहुत सारे लोगों को जो है ना इस चीज़ से इश्यूज जो है वो रहते हैं, बहुत सारे लोगों को इश्यूज जो है वो नहीं रहते, क्योंकि कई लोगों का जो है ना वो यही एक पॉइंट होता है कि भाई देश को तरक्की करनी चाहिए, आगे की तरफ जाना चाहिए, आपको ब्रेन्स जो है वो यूटिलाइज जो है वो करना चाहिए। लेकिन ऑन दी अदर साइड जो है ना कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि भाई डेमोग्राफिक्स जो है ना वो चेंज जो है वो नहीं होने चाहिए, और समहाउ वो सही भी होते हैं, क्योंकि अगर रिसेंट टाइम में अगर देखा जाए तो आपको जो है कनाडा में जो है एक एग्जांपल जो है वो देखने को मिलती है जहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ और कहा गया कि कैनेडियन सारे यूरोप जो है वो वापस चले जाएं। तो मेरा ख्याल है कि आपको जो है ना बहुत सारी चीज़ें जो है ना उस सोसाइटी में मेंटेन रखनी पड़ती हैं। नहीं, लेकिन इलीगल इमिग्रेशन की अगर बात करें तो मुझे ऐसा लगता है ठीक है, सम एक्सटेंट आप उनको रख सकते हो, लेकिन आप देखो अगर उसकी कॉस्ट आपको ये पे करनी पड़ेगी कि आपके खुद के लोग सफ़र कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि नहीं, इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एक कंट्री का काम नहीं है। ये अगर देखें बहुत मतलब बाकी सारे कंट्रीज़ की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उन सब लोगों के लिए कुछ मतलब जो कंट्री जो है क्राइसिस में है या कुछ भी वहाँ पर स्थिति बन रही है, बहुत सारे लोग ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर जाकर आप कह लें कि असाइलम लेते हैं, तो आप उनको बिल्कुल हेल्प करो। बट आई थिंक ये एक कंट्री का कभी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहती। और अगर हम लोग इस मामले में देखें, इंडिया को देखें, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसकी सराउंडिंग में जैसे कंट्रीज़ हैं और उसमें मुझे ऐसा लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा बर्डन जो है वो एक देखने को मिलता है इंडिया के ऊपर इलीगल इमिग्रेशन का। फिर उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि प्राइम मिनिस्टर वो होना चाहिए
जो वाकई में आपको काम करके दिखा रहा है। अभी जैसे उन्होंने योगी जी की, क्योंकि यहाँ पर तो स्पेसिफिकली योगी जी की बात हो रही है, तो जो चेंजेस उनके आने से आए लोग वो चीज़ देखेंगे मुझे लगता है। और अगर आप देखो कि पार्टी में भी जब अकाउंटेबिलिटी होती होगी, मैं गलत भी हो सकती हूँ, लेकिन ऑब्वियसली परफॉर्मेंस बेस पर ही होती होगी कि कोई कार्यकर्ता कितना ज़्यादा एक्टिवली चीज़ों को हैंडल कर रहा है और वो कितना इन्वॉल्व हो रहा है लोगों की बेटरमेंट के लिए या पार्टी के लिए। ये सब चीज़ें मुझे लगता है कि देखी जाती होंगी। और अगर हम लोग जैसे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की बात करें तो जिस तरीके से वीडियो में बताया गया, इनफैक्ट हम लोग भी ये चीज़ सुनते हैं कि वहाँ पर अब बहुत अच्छी स्थिति में आपको यूपी नज़र आता है, क्योंकि यूपी एक टाइम में क्राइम की अगर बात करें तो आपको उसकी रेशियो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती थी। मतलब हम लोगों ने तो ये चीज़ें जो है वो सिर्फ सुनी है, लेकिन जिन लोगों ने एक्सपीरियंस किया है या जिन लोगों को पता है, या हम लोग जो वीडियो भी देखते हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से भी आपको इतना डेवलप नज़र नहीं आता बिहार की अगर हम लोग बात करें। और इनफैक्ट जब हम लोगों ने एक दो वीडियोस भी देखी थी कर्ली टेल्स की, उसमें भी उन्होंने बोला था, जो टूरिस्ट मिनिस्टर थे बिहार के, उन्होंने बोला था कि पोटेंशियल बहुत है इस जगह में और यहाँ पर सब कुछ है, बस क्या है कि काम करने की ज़रूरत है। और जब वो हो जाएगा तो ये एक बहुत उभर कर सामने स्टेट आएगी। इनफैक्ट मैं यहाँ पर ये बात बोलूँगी कि जब योगी जी की भी बात करूँ मैं, तो ब्रांडिंग को लेकर जो बात की गई थी, तो मुझे ये वाकई में बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि हमने वीडियो भी देखी थी और उसमें भी हम लोगों ने ये चीज़ देखी है कि वो किस तरीके से अपनी लोकल प्रोडक्शन को एक तो स्टेट लेवल पर भी, अपनी कंट्री मतलब के उसके लेवल पर भी, और उसके अलावा इंटरनेशनल लेवल पर भी उन प्रोडक्ट्स को की ब्रांडिंग करके जो जितने भी जो सेलर हैं या जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उनको फ़ायदा जो है एक्चुअली में होगा। तो मुझे लगता है ये ब्रांडिंग वाला जो एक कॉन्सेप्ट जो उन्होंने बोला कि मतलब एक जो उसकी प्राइस होगी उससे ज़्यादा प्राइस आपको मिलेगी, वो चीज़ मुझे लगता है कि बहुत अच्छी है, क्योंकि इससे वाकई में स्टेट लेवल पर जब ब्रेन ड्रेन कम होगा तो बड़े बड़े शहरों पर उसका बर्डन कम पड़ेगा। और मुझे लगता है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि हम लोग इतना ज़्यादा इस चीज़ को लाइटली लेते हैं ना, कि बड़े शहरों पर इतना ज़्यादा फोकस हो जाता है कि जो इर्द गिर्द के छोटे छोटे शहर होते हैं, या आप कह लो कि ऐसे शहर जो कि जहाँ पर पोटेंशियल होता है कि वहाँ पर चीज़ें की जा सकती हैं और लोगों की बेटरमेंट के लिए और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर दी जाती है, मुझे लगता है वो थोड़ा इग्नोर हो जाता है। तो मुझे लगता है कि ये वाकई में एक बहुत अच्छी बात है कि आप उन जगहों को भी बल्कि और ज़्यादा स्टेबल करो, ताकि वहाँ की जो एक पोटेंशियल है वो उभर कर सामने आए और उससे जो बड़े बड़े शहर हैं उन पर बर्डन जो है वो कम हो। लेकिन मेरा ख्याल है कि भाई अगर छोटे शहर आप डेवलप भी कर देंगे ना, तो बड़े शहर जो है ना उनका आप कह रहे हो जो बर्डन कम हो, वो मेरा ख्याल है नहीं होगा, क्योंकि उनकी जो है ना एक सिग्निफिकेंस जो इम्पोर्टेंस जो है वो हमेशा जो है वो रहती है। और लोग जो है वो छोटा शहर से जो है ना बड़े शहर की तरफ जो है ना वो अट्रैक्ट होते ही होते हैं, मूव करते ही करते हैं। तो ये चीज़ जो है ना वो कम नहीं हो सकती। हाँ, ये चीज़ सिर्फ हो सकती है कि आप छोटे शहरों में जो है ना इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो क्रिएट कर दें कि जो आपका जो माइग्रेशन का जो एक लेवल है ना बड़े शहरों की तरफ वो कम हो जाए। क्योंकि अगर हम लोग माइग्रेशन की बात करें तो जो टॉप के आप कह लो कि जो स्टेट्स हैं जहाँ से माइग्रेशन होती है उनमें से यूपी का भी जो नाम आता है, और महाराष्ट्र की अगर हम लोग बात करें कि महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा माइग्रेशन होती है, तो आई थिंक जो वीडियो हमने देखी थी उसमें भी ये बताया गया कि 50+ जो है वो माइग्रेशन महाराष्ट्र अकेले में होती है। तो इसका मतलब ये कि महाराष्ट्र में अगर आप देखो तो अपॉर्चुनिटीज़ नो डाउट ज़्यादा है। अगर छोटे शहरों में भी आपको वो सुविधाएं जो हैं ठीक है, बहुत बड़े शहरों जितनी ना हो, लेकिन जैसे मौसम ने बोला है, तो मुझे लगता है कि वो माइग्रेशन का जो आंकड़ा है ना वो काफ़ी कम हो जाएगा। बाकी मुझे ऐसा लगता है कि ये तो जो इंडिया की जनता है वो ज़्यादा बेहतर समझती है कि कौन से कैंडिडेट्स में उनको पोटेंशियल सबसे ज़्यादा नज़र आता है, क्योंकि अगेन उन्होंने बीच में जो ये बात भी बोली जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी कि एक होता है अपने कंट्री के मैटर्स को हैंडल करना और साथ में इंटरनेशनली चीज़ों को हैंडल करना, तो उन और अपनी वीकनेसेस पर काम करना। सो मुझे लगता है कि वाकई में ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपको बहुत बहुत ज़्यादा परफेक्शन चाहिए होती है कि आप चीज़ें जो हैं सिचुएशंस को हैंडल कर सको। बेसिकली आपको जो है ना हर तरफ जो है वो सोचना पड़ता है, हर तरफ ध्यान रखना पड़ता है। बिल्कुल। बाकी कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है, क्योंकि अगर हम लोग पीएम मोदी जी की भी बात करें तो गुजरात से उनका सफ़र शुरू हुआ था और फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा कि वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बने।
तो मुझे लगता है कि कोई अचंभे की बात नहीं होगी कि अगर योगी जी भी जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बने, क्योंकि आप स्टेट लेवल पर जिस तरीके से काम किया जाता है, अगेन परफॉर्मेंस जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। बाकी आपका क्या मानना है कि आप कौन से लीडर्स को देख रहे हैं कि आने वाले टाइम में वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बन सकते हैं? और इसी के साथ हमें वीडियो में शामिल करें। गुड बाय।